Sound tak betul mummy. Good evening, good evening. Please join the students. Please join here for the session. Good evening, Mohit. Okay. Good evening, good evening. Please join the students. Please join here for the session. Good evening, Ratnanjali. Good evening, Vikas. Good evening, everyone. गुड इवनिंग या है ये डीएम एडीएम दोनों भी है इसको डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स बोल के एक वर्ड है देखो आपका सिलेबस में ओके आपका सिलेबस में ये दोनों भी है बच्चों ओके डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीसीएम मॉड्यूलेशन डीएम एंड एडीएम इसके बाद जाएंगे बाइनरी सिग्नलिंग्स ओके एएस के एफएस के पीएस को जाएंगे बच्चों ओके है डेफिनेटली भाई क्यों क्यों नहीं है किसने बोला था आपको नहीं है बोल के ओके सब मॉड्यूलेशन पल्स कोड मॉड्यूलेशन डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन कुछ नहीं है बस एक छोटा सा छोटा 5 मिनट का टॉपिक है बच्चों ओके उसमें ज़्यादा नहीं है ओके बट डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड पल्स कोड मॉड्यूलेशन दोनों very very important my dear friends over here okay so once again good evening my dear friends हम लोग लास्ट सेशन में क्या देखा था we are gone for the very very important is that the errors in delta modulation that is slope overload distortion and granular noise हम लोग conditions single tone modulation में भी हम लोग conditions देखा है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद हम लोग थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल्स भी करवाया बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वी आर गोइंग फॉर ए लिटिल बिट ऑफ टू प्रॉब्लम्स विच आर देयर इन डेल्टा मॉड्यूलेशन उसके बाद जाएंगे एडीएम छोटा सा 5 मिनट टॉपिक उसके बाद हम लोग जाने वाला है दैट इज बैंड पास डेटा ट्रांसमिशन टेक्निक इसको ज़रूरत है लाइन कोडिंग वो लाइन कोडिंग कैसे होता है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो भी आपको इस सेशन में पढ़ाऊंगा ओके बच्चों चल we are going for the very very important session my dear friends he has given the question basic needed question okay a sinusoidal signal इन्होंने एक साइनसाइडल सिग्नल दिया था बच्चों दैट इज ऑल्सो व्हाट इज द सिग्नल ईयर इन्होंने दिया नहीं इधर एक्स ऑफ टी ओके एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 600 पाई 6000 pi t a sinusoidal signal is to be transmitted okay using either PCM or delta modulation the sampling rate is equal to 8 kilohertz and the number of quantization level is equal to 64 and the step size of the delta modulation in order to avoid the slope overload distortion is 31.24 फाइंड द बिट रेट्स ऑफ पीसीएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन में आरबी का वैल्यू क्या है बच्चों इन्हें पूछने वाला है ओके ही इज आस्किंग माय डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर ओके ही हैज गिवन व्हाट आर द पैरामीटर्स ही हैज गिवन फर्स्ट राइट डाउन ही हैज गिवन द पैरामीटर्स एफएस sampling rate okay so what are the sampling rate he has given that is pretty important my dear friends fs which is equal to 8 kilohertz he only given my dear friends fs is equal to 8 kilohertz only he has given and the number of quantization level l is equal to 64 का मतलब कितना है बच्चों 2 power n that is equal to कितना है 2 power n बोले तो n वैल्यू क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा n इक्वल टू 6 n is equal to 6 my dear friends which is equal to very very important over here and इन्होंने स्टेप साइज भी दिया था बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट डेल्टा इज इक्वल टू 31.24
2, 4, my dear friends. Okay, he only given all these particular parameters, my dear friends, over here. Okay, now he is asking, my dear friends, some important points over here. Okay, see, इसमें से am cos of here, what I am going to take it is very very important, my dear friends. 2 pi into fm, ये क्या है, cos of इन्होंने दिया था x of t is equal to cos 6000 pi t. ओके, इसमें am कितना है, am इक्वल टू 1 वोल्ट एंड 2 पाई छोड़ के fm इज इक्वल टू 3000 hertz am, and here I have taken, these are all the parameters he has given. Okay, now my dear friends, I am going for the very very important point is to calculate the bit rate in the two modulations. Okay, bit rate in the two modulations I am going to do. The bit rates are very very important, my dear friends. How to calculate the bit rate in the two modulation techniques. One is first one is what, my dear friends, in the PCM, and next in delta modulation he is asking how to calculate the bit rate. Okay, RB का value कितना है बच्चों, he is asking. RB is equal to how much? Okay, so RB is equal to, what is the formula, my dear friends, in PCM? N is equal to Fs. Okay, so bit rate RB, what is the value of RB? RB equal to, here whatever the value you are getting is 6 and Fs value इन्होंने दिया था, N value आपको आया था, देखो N value is equal to 6 and Fs is equal to 8k. Substitute here, directly you are getting, then it is equal to 48 kbps. ये आसान से आता है bit rate. Okay, ये आसान से आता है बच्चों. Very very important is the bit rate. But when I are going to calculate here in delta modulation, okay, इन्होंने condition दिया था, देखो, in order to avoid the slope overload distortion, he is asking not to occur the slope overload distortion बच्चों. Very very important. Okay, so here what I am going to tell you very very important is that to avoid what, my dear friends, is the very very important is what, to avoid the slope overload distortion over here, to avoid, not to occur. Okay, so to avoid means what is the condition, delta, to occur means delta by ts is less than am 2 pi fm, but it is avoid to slope overload greater than or equal to am 2 pi into EFM. ओके, सो इधर मैंने आपको और एक बात बताना था, RB का फार्मूला का बिट रेट इज इक्वल टू, यार डेल्टा मॉड्यूलेशन में RB इज इक्वल टू डायरेक्टली बिट डेल्टा मॉड्यूलेशन लो, n वैल्यू क्या है 1. ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला, n इक्वल टू 1 इज द डेल्टा मॉड्यूलेशन, RB इक्वल टू Fs. So sampling, nothing but we need to calculate what, my dear friends, simply Fs. Okay, which is very very important here. Okay, so how you are getting here? So here I am taking equal. Okay, I am taking the equal symbol for the calculation. Delta by 2s is equal to am 2 pi into fm, my dear friends. For your convenience, I am taking out my photo for clarity of the board. For the clarity of the board, my dear friends, I am taking it out. Okay, very very important here. Delta into 1 by ts को कैसे लिख सकता हूँ, Fs. Okay, Fs is equal to am 2 pi fm divided by delta. Okay, delta, my dear friends, which is equal to, very very important here, delta कितना है, 32 millivolts ये दिया था, step size is equal to millivolts, my dear friends. Then here Fs, which is nothing but the bit rate, am value कितना है 1 into 2 pi into this is 3000. fm इन्होंने दिया था, वो आया था 3000 by 31 millivolt. Okay, 31.24 into 10 power minus 3. Then you are getting my dear friends Fs value. Okay, which is equal to, very very important, what is the value of Fs you are getting? Fs आपको कितना आ जाएगा बच्चों? So which is nothing but that is equal to 603. Okay,
603.07, okay, which is nothing but, my dear friends, kilohertz. But here fs is almost all equal to bit rate. Fs is almost all equal to what, my dear friends? Bit rate. So what is the value of the bit rate in delta modulation? The bit rate is equal to RB. In units are bits per second. Here it is K is there. Then it is nothing but 603.07 kbps. Okay, is the bit rate, my dear friends. You are getting, my dear friends, in the delta modulation. You are going to get where, my dear friends? In the delta modulation, my dear friends. Okay, अभी तक जितना भी है ना मैंने आपको पढ़ाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्लियर हो गया बच्चा मैंने कैसे कर दिया? ओके, what is the condition to avoid? Okay, so not to occur, to avoid the slope overload distortion, which is equal to, very very important, my dear friends. Okay, very very important over here. Okay, similarly I am going for the next very very important, my dear friends. सी ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन में डेल्टा मॉड्यूलेशन में बिट रेट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बोल दिया. ओके, इसके बाद now, my dear friends, he has given certain question here. A sinusoidal signal, okay, of 2 kilohertz frequency. इन्होंने दिया था बच्चों, very very important is the 2 kilohertz frequency is what, my dear friends? This is FM is applied to a delta modulator. He has given, my dear friends, is that the sampling rate and step size. इन्होंने दिया था sampling rate fs दिया था और step size दिया था 0.1. To prevent here, to prevent the slope overload distortion, the maximum amplitude, the maximum, what is the maximum amplitude is asking, my dear friends? इन्होंने 4 options दिया था. एक option which is equal to less than or equal to 1 by 2 pi. एक option दिया था less than 1 by 2 pi. एक option दिया था greater than 1 by 2 pi. और एक option दिया था ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 by 2 पाई. ये 4 ऑप्शंस दिया था बच्चों. ओके, यार आपका क्वेश्चन कभी भी देखना है, उसमें सेंस करना है क्या दिया तो बोलते हैं नॉट टू अक्कर हियर टू प्रिवेंट द स्लोप ओवरलोड. नॉट टू अक्कर, माय डियर फ्रेंड्स. सो टू अक्कर मीन्स डेल्टा बाई टी एस इज लेस देन am 2 pi fm, but here it is going to be prevent. To prevent means, to occur means the condition is, what is the condition? Delta by ts is less than am 2 pi fm. This is what for occurring, my dear friends. Okay, but I am asking to prevent. To prevent बोले तो greater than or equal. It is nothing but greater than or equal over here. Okay, इन्होंने हर एक वैल्यू दिया था. ये fm वैल्यू दिया था. ये क्या है बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट सैम्पलिंग रेट बोले तो fs. Okay, and this is what delta. Okay, now he is asking what is the value of the, okay, very very important is the maximum amplitude. He is asking what is the value of this am. What is the value of this particular am, my dear friends? He is asking this particular point over here. You got it, my dear friends, how I am doing? Okay, very very important here. Okay, so here delta into 1 by ts को क्या लिख सकता हूँ? fs लिख सकता हूँ. फॉर योर कंडीशन इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू am 2 pi fm. डेल्टा वैल्यू कितना दिया था? डेल्टा इज इक्वल टू 0.1 इंटू 20,000 ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइंड आउट am 2 pi लगा दो. fm का वैल्यू कितना है? 2 kilohertz बोले तो 2000. ओके, so whatever it may be, my dear friends, this thing and this complete thing will be cancelled out. 1 by 2 pi is greater here. I am going to take it, my dear friends, very very important here. How I am writing here, इधर देख लीजिए मैं कैसे लिख रहा हूँ. very very important here. Okay, so here ये इस तरफ लेके आ रहा हूँ बच्चों. very very important here. 1 by 2 pi is greater than or equal to am. What is the answer? Answer क्या है बच्चों? Okay, 1 by 2 pi is greater than or equal to. So what is the answer, my dear friends? So what is the answer here? Yes,
What is the answer? Very good, very good, very good, very good. Okay. AM is less than or equal to 1 by 2 pi. Option is A. आप समझ में बच्चों मैंने कैसे किया? Very very important, my dear friends, what I am explaining to you. Okay. Now, next. ओके चलो बच्चों एकदम बेहतरीन कर रहे हैं आप भी यू आर डूइंग ऑल्सो वेरी वेल. So, okay, my dear friends, which is a pretty important topic, my dear friends, over here. Okay. So, now we are going for the very important is the adaptive delta modulation. Adaptive delta modulation का ऊपर जो भी है ना concept उसमें ज़्यादा तरीके नहीं है. Okay. Just we are going for what purpose we are going to use what, my dear friends, very important is okay, the adaptive delta modulation. ओके नेक्स्ट बच्चों मैंने अभी तक जो भी बता दिया ये सब वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. ओके व्हाट एवर द थिंग्स आई हैव बीन प्रेडिक्टेड ओवर हियर. ओके वेरी इंपॉर्टेंट. सी next one is what? Adaptive delta modulation. Okay, adaptive delta modulation is pretty important over here. Okay, so first PCM, for what purpose we are going to use the PCM my dear friends, we are going to sampling quantizing उसके बाद encoding कर रहे. ओके सो जितना भी सैम्पल्स दे रहे हैं ना वो सैम्पल्स को मैं क्या कर रहा हूँ क्वांटाइज करने के बाद एनकोड करने वाला हूँ. ओके बट हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू माय डियर फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट इन ओके हियर व्हाट काइंड ऑफ एरर्स गेटिंग इन डेल्टा मॉड्यूलेशन. You are getting the two errors in the delta modulation. One is the slope overload distortion. Second one is the granular noise. Okay, this is also I have been finished my dear friends. Very important over here. Now I am going for the very important is that the adaptive delta modulation. इसको क्यों use कर रहा हूँ मैंने? Okay, why I am going to use this one? Okay, so first one is that adaptive delta modulation is used to vary the step size. Okay, by using the step size controller. By using what my dear friends? Step size controller बच्चों. Okay, हो गया. आप तो क्लासेस मिस कर दिया मोहित. देखना है वीडियो हो गया. वीडियो नहीं देख रहे आप. डेल्टा मॉड्यूलेशन का कल यूट्यूब लाइव सेशन में मैंने पढ़ाया. कल का यूट्यूब लाइव सेशन तो मिस कर दिया. कल यूट्यूब लाइव यस्टरडेज यूट्यूब लाइव सेशन इज रिगार्डिंग द थियरी पार्ट ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड फॉलोड बाय प्रॉब्लम्स. कल क्लास मिस कर दिया. दिस व्हाट आर द यूट्यूब सेशंस आई एम टेकिंग नाउअडेज. आई एम टीचिंग द कॉन्सेप्ट आल्सो. Go for the yesterday's YouTube live session. Okay. Okay. Now, adaptive delta modulation is used to vary the step size by using. Okay. So, adaptive delta modulation क्यों use कर रहा हूँ? Adaptive delta modulation is very important, my dear friends. Is that see, so to reduce the slope overload distortion विदाउट इंक्रीजिंग द ग्रैन्युलर नॉइस. ओके जितना भी ग्रैन्युलर नॉइस होना है वो होने दो. ग्रैन्युलर नॉइस से कोई फर्क नहीं है. ओके बट स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन वो कम करना है. ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट टू रिड्यूस द स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन माय डियर फ्रेंड्स विच इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू द वेरी इंपॉर्टेंट इज द स्टेप साइज. ओके सो स्टेप साइज इज वेरिंग. सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू, मैंने कल ही क्लास में बता दिया था. ओके सपोज आपको मैंने जो भी मैसेज सिग्नल दे रहा हूँ ना, मैसेज सिग्नल. ओके ये मैंने जो देना वाला मैसेज सिग्नल वो ऐसे मैसेज सिग्नल है. दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स. ओके हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंक्रीज. इधर ग्रैन्युलर नॉइज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके सो हियर व्हाट एवर द स्टेप साइज, ओके दैट आई एम गोइंग टू चेंज. दैट इज फॉर द वेरी लेस स्टेप साइज. ओके जो भी लेस स्टेप साइज है ना वो वाला. देखो अभी कम स्टेप साइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज़्यादा होता है तो उसको ऐसे एक बार देख लीजिए. ऐसे स्टेप होता है तो ये कम है. इसके बाद जो स्टेप साइज है ना वो थोड़ा बड़ा स्टेप साइज है. वैसे इफ द स्टेप साइज इज मोर
then there is no problem, because if step size is maximum, then what I am going to do, my dear students, is that very very important is that, my dear students, that is granular noise. Okay, I want to increase the step size for the less one, okay. This is what, my dear students, slope of the, मैंने कल क्लास में बता दिया था. Okay, slope of the message signal. This is slope of the message signal. ये क्या है बच्चों? This is the slope of the staircase waveform or the slope of the step size. A staircase भी लिख सकता हूँ क्योंकि हर एक है स्टेप. ओके, स्लोप ऑफ द staircase waveform बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो एक ही पॉइंट इधर आप लगाना है. एडीएम क्यों यूज कर रहे? ओके, एडीएम इज यूज्ड, माय डियर स्टूडेंट्स, टू वैरी द स्टेप साइज बाय यूजिंग द step size controller. Okay, so for what purpose we are going to use this ADM is to reduce the slope overlay distortion without increasing granular noise. Just this particular point, 2 points you need to remember for your NEET examination. इसके बाद ज़रूरत नहीं है, जितना भी है ना इधर तक बस इतना ही चाहिए. Okay, no need of going for any in depth, my dear students, over here. Okay, now my dear students, अब देख लेंगे एक दो छोटा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग जाएंगे लाइन कोडिंग. ओके, लाइन कोडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट इज ASK, FSK एंड PSK. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आपका SQNR, ओके, PCM में इसका आंसर क्या है बच्चों? एज द नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज इन ए PCM, द सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो इज इंप्रूव्ड बाय a factor of. नेक्स्ट, व्हाट इज द आंसर? As the number of bits increased in a PCM, the signal to quantization noise ratio is improved by a factor of. वेरी गुड, वेरी गुड. 6 dB, 6 dB. ओके, मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बोल दिया है. ओके, SQNR का फार्मूला का है PCM में, दैट इज इक्वल टू 1.8 प्लस 6n डेसिबल्स. ओके, if n value is increasing, n equal to 1, n equal to 2, okay, n equal to 3, like that these values are increasing. Put here n equal to 1 once, n equal to 1, 7.8, n equal to 2. Put, my dear friends, here n equal to 2 means here what happens? 13.8. okay, always very very important is what, my dear friends, the difference. n equal to 3, what is the value, my dear friends? n equal to 3 means 6 3 18, 19.8. देखो डिफरेंस कितना है, जो भी डिफरेंस है ना कितना है? 6 dB. 6 dB, my dear friends. Okay, so as the number of bits are increased, see here n value is increasing, the difference is constant, that is what, 6 dB. Okay, very very important point, just I would like to bring it to your notice over here, my dear friends. Okay, next question. The formula to calculate the quantization noise power, QNP. The formula to calculate the quantization noise power in SQNR in a PCM system uses, बच्चों very very important here. Okay, मैंने quantization noise power I want to calculate in SQNR. Okay, SQNR means that is only quantization noise power. I need to calculate the quantization noise power. If I want to calculate the quantization noise power, my dear students, very very important is that, okay, very very important is that what kind of okay, what kind of formula I am going to use in that is in this one? Anybody? I think nobody is giving response except Mohit. What the rest are doing? For what is the formula, my dear students, to calculate over here?
First one is mean value, second one is mean square value, third one is standard deviation, fourth one is variance. Fourth one is variance, my dear friends. Okay, what is the formula? Always I told you, my dear friends, is that quantization noise power ka formula. We are going to take the limits. Okay, what kind of for what is the formula? We are going to take it, my dear friends. Minus delta by 2 to delta by 2. Okay, x square into f of x into dx అనుకోండి. Q is square into fqe into dqe. Okay, here what happens? This is nothing but what the second one is that quantization noise power s square norm में calculate करना है तो I need to take the mean square value. Option is 2. Option is 2, my dear friends. Okay, which is very very important here. Okay, option is 2. Similarly, the formula to calculate same question repeat हो गया. As quantization level increases, maximum quantization error DPCM हो गया ना बच्चों. DPCM में मैंने बोला था as the quantization levels are increasing, then what happens to the QE max? What happens to the QE max? Nobody is giving response. QE max क्या हो जाएगा बच्चों? DPCM हो गया क्या? Option 2, Mohit, very good. The QE max decreases. मैंने बोला था आपको. Okay, nobody is giving response. Okay, yes, it is going to be decreasing, my dear friends. मैंने आपको DPCM में बोला था. In DPCM, in differential pulse code modulation, as quantization level L is increasing, what is the maximum quantization error? It is going to be decreasing, my dear friends. Already I told you. Okay, similarly, mention the errors in delta modulation. कितना errors है delta modulation में? कितना तरीका errors है बच्चों? How many types of errors are present, my dear friends, in the delta modulation? Mention the errors in the delta modulation. कितना तरीका errors से? How many errors you are going to get, my dear friends, over here? This is option. Second question is 2, not this 3. This 2. Second question is 2. Okay. कितना तरीका का errors आ रहे? 2 types of errors. One is the slope overload distortion. Second one is granular noise. Okay. So option itself is 2, my dear friends. Okay, 2 types of errors. Okay, slope overload distortion and the granular noise, my dear friends. We have been finished over here. Okay, बच्चों अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माय डियर फ्रेंड्स, ओवर हियर. अभी हम लोग जाएंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द लाइन कोडिंग. ओके, हम लोग जाने वाला है लाइन कोडिंग बच्चों. ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, लाइन कोडिंग का ज़रूरत क्या है? ओके, हम लोग का ट्रांसमिशन क्या है बच्चों? हमारा ट्रांसमिशन डिजिटल कम्युनिकेशन में 2 तरीका है. एक बेस बैंड डेटा ट्रांसमिशन, दूसरा बैंड पास. ओके, दूसरा बैंड पास. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, when you are going to study about the modulation techniques like ASK, FSK and PSK, ये है क्या? नीलिट एग्जामिनेशन में, नीलिट एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स है या नहीं है? These topics are there, my dear friends, very very important here. Okay, so here amplitude shift keying, frequency shift keying and the phase shift keying, my dear friends, see here, for studying this thing we are going to give the input
in the form of electrical representation of ones and zeros. Okay, electrical representation of ones and zeros is called line coding. Okay, very important my dear friends. First you need to listen. ये जो भी है ना, ये लाइन कोडिंग हम लोग क्यों पढ़ा रहे बोले तो हम लोग का जो भी इनपुट्स एएस के, एफएस के, पीएस के या क्यूपीएस के, वॉट एवर द थिंग्स बाइनरी सिग्नलिंग्स को जाना है तो हम लोग का लाइन कोडिंग जरूरत है. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड मोहित. ओके, सो एनकोडर क्या देता है? द एनकोडर इज एन इट विल बी एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस. एनकोडर क्या होता है? ट्रांसमीटर सेक्शन या रिसीवर सेक्शन? ट्रांसमीटर सेक्शन में. ओके, सो एनकोडर इज एन ई टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड आउटपुट इज द binary data. Okay, so the following methods are used to represent the binary data electrically. Okay, so electrical representation of ones and zeros is called line coding. Okay, binary signalings, we are going to give the binary signalings with respect to the zeros and ones. Okay, अभी नीट एग्जामिनेशन के बच्चों आपको यही वाला आपको पूछेगा. very important my dear friends is that this particular concept over here. Okay, so when I am going to teach you the very important concept over here is this particular line coding. Okay, these representations are pretty important my dear friends when you are going to study here. Okay, so that's the reason I am going to tell you very important is that what is the first signaling? The first signaling is what? What is the first signaling? On-off signaling. On-off signaling my dear friends. We are representing 1 and zeros, electrical representation of ones and zeros. Okay, on-off signaling, one is represented by which one? That is by positive. On-off signaling का दूसरा नाम क्या है? Zero is represented by my dear friends simply one is represented by positive and zero is represented by simply 0 volts. 0 volts. On-off signaling is also called as unipolar signaling. It is also called as unipolar signaling. Very good Ratnanjali. Okay, this is very important. These are the two important parameters. Just I would like to bring it to your notice over here. Next, NRZ or bipolar signaling. Very important here. Ones and zeros. Okay, one is see NRZ means non-return to zero. It will not return to zero my dear friends. It is moving in a upper positive quadrant and there is a negative quadrant. NRZ or bipolar signaling my dear friends. One is represented by positive pulse and zero is represented by negative pulse. Okay, इधर very important on off signaling का use करता है. Where you are using in a ASK एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में जो यूज करता है ना वो क्या है बच्चों? that is what my dear friends on off signaling. Okay my dear friends, not written. Okay, so here next one is what my dear friends is that bipolar signaling or non-return to zero signaling. Where we are using my dear friends very important is that PCM में यही यूज करता है, DPCM में यही यूज करता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन में भी यही यूज करता है. उसके बाद बाइनरी सिग्नल्स क्या है? FSK और PSK भी we are going to use my dear friends these particular things over here. Okay, नीट एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा what where we are going to use the my dear friends which one and where we are using over here. Next one is return to zero signaling. Okay, return to zero signaling means it is returning to zero. Here also one can be represented. One can be represented my dear friends in two ways. Okay, one is TB by 2 half bits. Okay, one is represented by half of the half, that is called half of the pulse positive. Another half one is represented by TB by 2, that is I will show you later in the form of waveforms also. Okay, negative. Okay, another one is negative my dear friends. Okay, and 0 is as usual it will be not be represented. 0 is as usual it is 0 volts. Okay, 0 volts. ये कहाँ यूज करता है? Where we are using this is used in optical fiber communications. OFC में OFC कहाँ यूज करता है बच्चों? very important is the OFC, optical fiber
कम्युनिकेशन में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, जीरो. समझ में आया बच्चों मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? एवरीवन इज क्लियर? प्लीज ड्रॉप द मैसेज इफ इट इज क्लियर. नेक्स्ट डिफरेंशियल एनकोडिंग बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंशियल एनकोडिंग ऑलवेज वी आर कंपेयरिंग विद द ऑन ऑफ. ओके, डिफरेंशियल एनकोडिंग करना है तो मन बेस क्या लेना है? ऑन ऑफ. ऑन ऑफ लेना है बच्चों. ऑन ऑफ से डिफरेंशियल एनकोडिंग करना पड़ता है वन का और जीरो का. ओके, वन का और जीरो का. वन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रीवियस लेवल, सिंपली. Zero is represented by also previous level. आपको दिखाऊंगा बच्चों, but this is what complementary of the previous level. One is represented by previous level, zero is represented by the this one. Differential encoding कहाँ use करता है बच्चों? Differential encoding we are going to use where? DPSK में. Where I am going to use my dear friends? DPSK. समझ में बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. नेक्स्ट वन इज मैनचेस्टर. मैनचेस्टर विल बी रिप्रेजेंटेड 1 and 0. It will be represented where one is with your 1 and another one is here I am taking as 0. Okay, 1 will be represented Manchester में positive pulse. Positive, it will be like this. 1 is represented by positive pulse. Okay, and 0 is represented by negative pulse. Negative से positive ऐसे. Okay, very very important my dear friends over here. Okay, complete, this is what? This is nothing but the complete. This is TB, bit duration. TB का मतलब क्या है? कंप्लीट क्या है? बिट ड्यूरेशन. ये भी क्या है बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बिट ड्यूरेशन बच्चों. ओके, नेगेटिव. ओके, ऑलवेज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. So okay, negative, this is positive and this is negative. I am writing here in the form of amplitude, means amplitude will be in the form of volts. I am taking this is V, this is minus V, this is plus V and this is minus V my dear friends. Okay, and this particular thing also we are going to use where my dear friends in fiber optic communications, where you are using my dear friends very very important is the fiber optic communications, where we are going to use all these things. Okay, with that you got the clarity my dear friends how I am going to use the different signalings. Okay, very very important my dear friends. Okay, now इसको मैं कैसे represent कर रहा हूँ, that is very very important here. Okay, how I am representing. Okay, signaling representation and their comparisons. Okay, signal को कैसे मैं represent कर रहा हूँ and their particular comparisons. Okay, just I am going to show you because the bandwidth formulas इन लोग ये सब सिग्नलिंग का बैंडविड्थ फार्मूलास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द वेरियस पैरामीटर्स over here. Okay, that particular thing also my dear friends I am going to explain over here. Okay, so here if I am taking okay, if I am taking my dear friends over here, very very important is that this one. Okay, suppose I am taking certain data, this is equal to 1. Okay, on off signaling 1 is represented by pulse. One this is what my dear friends 1, this one is 0, another pulse is 0. 1 is represented by pulse, 0 is not represented. 1 is represented by pulse and 0 is not represented. इधर मैंने स्पेस ज़्यादा लगाया.
this is 0 and this is 1. ओके, हर एक पल्स, ओके, हर एक पल्स के क्या है, इसको अभी तक इधर है ना, ये TB, this will be what my dear students, 2 TB. Okay, I am taking here, very very important. And next this is 3 TB, next one is 4 TB, next one is 5 TB, next one is the bit durations. Okay, okay, these are all the bit durations. Okay, next one is what my dear students, 6 TB. Okay, like that I am representing in the bit durations. Okay, here what happens my dear students, on off signaling, ये क्या है बच्चों, this is nothing but what, on off. 1 is represented by pulse and 0 is not represented. 1 is represented only positive amplitude and 0 is represented by simply line. Okay, 0 is 0 line origin. 0 is the 0 line my dear students. Okay, now my dear students, using this particular one, okay, on off signaling हुए, उसके बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, I am going for very very important modulation is what, that particular modulation is what, that particular is that is what, very very important is NRZ. NRZ में मैंने क्या बोला था बच्चों, आपको बोल दिया, अभी बोला था मैंने. NRZ में very very important is that, see, NRZ में 1 is represented by the positive pulse and 0 is represented by negative pulse. Okay, वही 1 is represented by the positive. See here, ये 1 है ना पॉजिटिव, एंड जो भी 0 है ना जाए 0 0 0 इधर तक नेगेटिव. 1 is represented by again positive, 0 is represented by again negative, 1 is represented by positive. Is that clear बच्चों? Is that clear? Okay, now here this is what, this is 0 line. Okay, here this is plus V, this is minus V, this is the 0 line my dear friends, 0 volts line. Okay, okay, very good. Okay, now here what I am going to do is pretty important. Okay, non return to 0, non return to 0. ये देखो, whether it is settling down at C, ये देखो, ये क्या है, ये देख लीजिए, रिटर्न टू 0, नॉन रिटर्न टू 0. रिटर्न टू 0 मतलब क्या है, ये कभी भी ये रिटर्न हो जाएगा 0 को. ये देखो, ये पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ये इट इज नॉट सेटलिंग डाउन एट द दिस 0 एक्सिस. दिस इज मूविंग इधर पॉजिटिव क्वाड्रेंट और नेगेटिव क्वाड्रेंट, बट इट इज नॉट. ये देखो, ये इस लाइन पे नहीं आ रहे, ये पूरा सिग्नलिंग है, तो जा रहे पॉजिटिव या तो नेगेटिव. ओके, very very important. Okay, and this particular one, next third one, this is what my dear students, this signaling is what, non return to 0 signaling. Okay, next signaling my dear students, which is equal to very very important. Okay, what is that one, and that particular thing is what, the next signaling is what, and that particular thing is that, okay, one pulse, one means आधा pulse है ना, pulse of half width is sent for 1. Okay, half width. Okay, and nothing for 0. Okay, जहाँ भी है ना देख लीजिए, ओनली हाफ पल्स इधर से इधर तक है ना, इसमें आधा पल्स ऐसे आप ले लीजिए. ओके, ये जहाँ भी होता है ना, देखो आधा पल्स ही होता है. हियर आधा पल्स, नथिंग फॉर 0. ओके, पल्स ऑफ हाफ सिंबल 1, रिटर्न टू 0 का मतलब क्या है, ओनली ये जो है पूरा पल्स में आधा इंच सेंड फॉर 1, नथिंग फॉर 0, नथिंग फॉर 0. कहाँ है 1, इधर 1 है, ऑफ. इधर क्या है बच्चों, दिस इज ऑल्सो हाफ, नथिंग फॉर 0, नथिंग फॉर व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, 0. एंड व्हाट टाइप ऑफ सिग्नलिंग, ये क्या है, पॉजिटिव वोल्ट से रिटर्न टू 0. देखो 0 तो 0 लाइन पे आया था. ओके, एंड दिस सिग्नलिंग इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, रिटर्न टू 0 signaling, return to 0 signaling. And this particular one here also, it is only half. See, this is what my dear friends, this is TB by 2. This complete is TB, up to here it is TB. इसमें आधा क्या है, TB by 2. Okay, this is next one is TB. Okay, again similarly this is what my dear friends, here I am taking 2 TB. Okay, next year my dear friends, like that I am taking, every time I am taking here it is 3 TB. इसमें आधा क्या है, 3 TB by 2, आधा.
Okay, every time, my dear friends, off, okay, 4 TB, like that it is going on, my dear friends, over here. Okay, but this on off signaling, non return to zero, and return to zero signaling, my dear friends, which have been explained over here. Okay, similarly, I am going for the next signaling. Next signaling is kya? I am always I want to do the differential encoding. Okay, if I want to do the differential encoding, very important is that always I need to take which one? On off signaling. Okay, on off signaling से compare करना है, differential coding encoding बनाना है तो. Okay, 0 1 here again 0, it is what, my dear students? It is simply, it is 1. Suppose I have taken this one. Okay, now on off signaling, वही on off signaling, पिछला वाला on off signaling यही वाला ले रहा हूँ मैंने, यही वाला मैंने ले रहा हूँ, यही signaling. Here the space is not enough, that's the reason I have taken here. Here it is 1 and it is 0 0 1 0 1. Okay, here what happens, I am taking here half of the widths. Okay, so here, my dear friends, so differential encoding kabhi bhi on off signaling se. Okay, see, differential encoding, the reference level, next one, next line is what, my dear friends, is that this one, a reference level is 0. Reference level, a जो भी है ना reference level, this is previous level. Reference level by default it is 0. Previous level or the reference level is 0 volts. ये जो भी है ना ये 0 वाला है reference. Very good. ये 0 वाला है previous level. 1 indicates a previous level है. 1 indicates 1 का क्या है? प्रीवियस लेवल. प्रीवियस लेवल क्या है? से ऐसे स्प्लिट करेंगे पहले. प्रीवियस लेवल क्या है? 1 इंडिकेट्स प्रीवियस लेवल क्या है? 0. 0 इंडिकेट्स प्रीवियस लेवल का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये प्रीवियस लेवल क्या है? Okay, so 1 indicates the previous level. Okay, 0 indicates इसका complement. 0 का complement क्या है? 1. Okay, and again 0 indicates the complement. This is 1. Then what happens to this particular level? It is 0. Okay, 1 indicates previous level क्या है? ऐसे. 0 indicates complement. Very important, my dear friends. Okay, so whatever the values you are getting is pretty important, my dear friends, over here. And 1 indicates here complement हो गया 0 previous level का, and 1 indicates previous level क्या है? It is moving on. Very good, it is going on like this. You are getting, my dear friends, how I done, my dear friends, very important. Okay, 1 indicates previous level क्या है? 0. वो इधर लिख दिया 0 मीन्स कॉम्प्लीमेंट. इसका 0 का क्या है? ये हो गया 1. ओके, 0. ओके, इसका कौन का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये वाला 0. 1 क्या है? प्रीवियस लेवल बोले तो 0. ओके, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? इधर 1. ओके, 1 क्या है? प्रीवियस लेवल 1 है, वही 1 इधर लगा दिया. ओके, माय डियर फ्रेंड्स, विच इज pretty इंपॉर्टेंट, माय डियर फ्रेंड्स, ओवर हियर. ओके, अभी जाएंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट इज द लास्ट वन, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज व्हाट, माय डियर फ्रेंड्स? मैनचेस्टर. मैनचेस्टर में क्या है बच्चों बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट. 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव पल्सेस. 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव टू पॉजिटिव पल्सेस. ओके, 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव. सी हियर 0. अब देख लो इधर 1 is represented by positive and negative. See here, and 0 when comes into the 0 negative से शुरू होता है. Again 0 it comes here, my dear friends, very important here. Okay, again it comes here, again negative से शुरू होता है like this. नेगेटिव से when comes into 1, my dear friends, very important. Okay, so जो भी है ना ये पॉजिटिव से
अगेन नेगेटिव, नेगेटिव 0 बोलते नेगेटिव से नीचे से ऊपर, अभी 1 पॉजिटिव से, like that it is going on. This is what, my dear friends, Manchester. This is what, my dear friends, Manchester. Manchester, my dear friends. Okay, is that clear, my dear friends? How I have been explained about the different types of signalings, my dear friends, over here. Okay, अब बच्चों देख लीजिए बैंडविड्थ. बैंडविड्थ क्या हो जाएगा बच्चों? बैंडविड्थ इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंडविड्थ क्या है? एक एक, व्हाट इज द वैल्यू? बैंडविड्थ इज इक्वल टू सिंपली ओनली one bit is there. Okay, only one bit is there, all are one bit only. So here what happens, the bandwidth is equal to what, my dear friends? 1 by TB, which is equal to RB. Okay, bandwidth RB hertz, because the pulse width is what? The pulse width कितना है? pulse width क्या है? TB है. pulse width कितना है? RB hertz. What is the bandwidth of on off signaling? Bandwidth is equal to 1 by TB. इधर का pulse width क्या है बच्चों? हर एक का pulse width, which is nothing but in the non-retentive zero also, the pulse width is same. Therefore, bandwidth is equal to 1 by TB, which is equal to RB hertz. RB hertz. Okay. Either the pulse width is half. Here what happens? The pulse width is becoming half, my dear friends. Okay, therefore what happens here? The bandwidth is equal to bandwidth. Okay, I am taking out my photo for your convenience. Bandwidth is equal to 1 by TB by 2. क्या है ना? आधा पल्स है ना? TB by 2, my dear friends. Okay, which is a very very important here. 1 is equal to TB by 2, which is equal to simply 2 by TB, which is equal to 1 by TB. वो क्या होता है बच्चों? 2 by TB मतलब 2 RB hertz. 2 RB hertz, my dear friends. Okay, which is equal to 2 RB hertz. Okay, similarly if I am going for the bandwidth here in differential encoding also, 1 bit, all are 1 bit only. Therefore bandwidth is equal to what, my dear friends? 1 by TB, which is equal to RB hertz. Okay, once we are going for what, my dear friends? Manchester में क्या है? आधा पल्स ही है, आधा पल्स. Okay, half of pulse only. Again in Manchester, bandwidth is equal to 1 by TB by 2, which is equal to 2 by TB, which is equal to 2 RB, which is equal to 2 RB, my dear friends, which is equal to very very important, 2 RB hertz. 2 RB hertz, my dear friends. Okay, which is a very very important point. Just I would like to bring it to your notice over here. Okay, so very very important, my dear friends, all these particular signalings. Okay, I am writing once again, my dear friends, what is the bandwidth formulas. Here bandwidth is equal to RB hertz. Here also bandwidth is same. Here the bandwidth is equal to 2 RB hertz. Here the bandwidth is equal to what I am going to tell you is very very important. Differential encoding 1 bit है ना? Here bandwidth is equal to आधा bit, 2 RB. You got clarity, my dear friends? How have been explained over here? Very very important, my dear friends, over here. Okay, now you got the clarity how I done, my dear friends, over here. Okay, okay, these are all the important things, my dear friends. Just I would like to bring it to your notice. और मोहित, आप तो प्रीवियस वीडियो देखा नहीं, कल यूट्यूब लाइव के सेशन में, एक्स्ट्रा यूट्यूब लाइव सेक्शन में मैंने डेल्टा मॉड्यूलेशन और उसका ऊपर जो भी है ना, मैंने वो वाला भी बता दिया. कल रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा नेक्स्ट वीक में आपको. मैं 10 रिकॉर्डिंग में पूरा सा पूरा ये जो भी है ना कम्युनिकेशंस में खत्म करूँगा. उसके बाद 1-2 लाइव यूट्यूब लाइव सेशन आएंगे.
very important, my dear students, is that you have the topics that are pending are ASK, FSK, and PSK, and we are going for the very important is that ML, okay, MAP, okay, intersymbol interference, basics of CDMA, TDMA, and FDMA, my dear, okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, वो सब मैंने आपको पूरा से पूरा निपटा दूंगा. मोहित, इसका डेट आया क्या, इस एग्जाम का कब है? एनी डेट? रत्नांजलि, एनी डेट यू आर गेटिंग हियर? इस एग्जामिनेशन का डेट कब है, कुछ है बोल के इन्फॉर्मेशन है क्या कुछ? या अभी 10 रिकॉर्डिंग में आप चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 10 रिकॉर्डिंग में ख़त्म करूँगा मोहित तेरी का, और एक हाथ साथ एक ख़त्म करेंगे उसके बाद. सो एवरी स्टूडेंट इज फ्रॉम CSER, ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ESE, एवरी स्टूडेंट? नॉट एट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सेशंस ऐसे चले जाएंगे. आपका जो भी कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ ना, सब यू नीड टू सेटिस्फाई. हर एक रिकॉर्डिंग एक सीक्वेंस वाइज में जा रहे, डोंट गो फॉर द रिकॉर्डिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, नो इन्फॉर्मेशन, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका ये डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में जो भी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स इज दैट आपका जो भी कॉन्सेप्ट, ओके, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट ये जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. या मोहित वो भी है, हाँ पीयूष CSA क्या, वो इलेक्ट्रिकल पार्ट another faculty my friend only will teach you, because the phase we need to change every time. If I'm teaching for the electrical part also, it is not to be good. My friend will teach you that electrical electromagnetics part and signals and systems, सब basics आपको पढ़ाएगा बच्चों, very important my dear friends. Don't forget that the sessions are very important. जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाला है ना, टेक्निकल वाला, आपका बेहतरीन सब्जेक्ट नॉलेज दूंगा एज वेल एज गेट स्मैशर्स आर कंसर्न्ड माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट वन, ओके. एनीहाउ, session is completed. Next YouTube live sessions you have on Friday and Saturday. Before that I am going for certain videos also, recordings, हर एक रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, डोंट मिस एनी पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग, ओके. हर एक रिकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज में मैं भेज रहा हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, कि जितना भी रिकॉर्डिंग्स मैंने करवा दिया, सब रिकॉर्डिंग्स आपको मैंने एक सेक्शन शीट में बना दिया, उसमें दिया था डेटा, ओके. थैंक यू वेरी मच. या वेरी गुड.